ओके सो आज हम स्टडी करेंगे पावर सिस्टम कंपोनेंट्स और मॉडलिंग। और आई डोंट थिंक सो कि हम सिंक्रोनस मशीन इट वाज माय टारगेट, लेकिन आज शायद हम ये ना करें, बल्कि इसकी जगह पे uh, हम ये एक एग्जांपल को करने की कोशिश करेंगे। 9 बस सिस्टम फ्रॉम जनरेशन टू लोड। ठीक है, इसको हम पावर फैक्ट्री में सिमुलेट करेंगे इन दिस सेकंड एज अ एक्टिविटी। इसका फ़ायदा ये है कि एक पूरा सिस्टम, पावर सिस्टम भी हमें एज एन एग्जांपल हम लेके चलेंगे। दूसरा ये कि पावर फैक्ट्री जो है उसका भी आज हम वी विल स्टार्ट अ सॉर्ट ऑफ अ डेमो अबाउट दिस सॉफ्टवेयर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पूरा पावर सिस्टम जनरेशन, ट्रांसमिशन, लोड वगैरह एनालिसिस के लिए, स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए दिस इज़ वन फेमस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैटलैब वगैरह पे भी आएंगे, बट दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई वुड लाइक टू शेयर। एक्चुअली वी विल स्टार्ट फ्रॉम पावर सिस्टम कंपोनेंट्स। मॉडलिंग एग्जैक्टली आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट इन सिंपल टर्म्स के सिंक्रोनस मशीन्स हैं, एक्साइटेशन सिस्टम्स हैं, प्राइम मूवर्स हैं, and a little bit about the power, the AC transmission, loads भी आज हम डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, and then I will directly switch to this activity. Now when we talk about electrical system, इसका एक बड़ा यूनिक फीचर है। वो फीचर ये है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको हम बहुत आसानी से इसकी स्टोरेज एक लार्ज क्वांटिटीज़ में बहुत मुश्किल है, या कम से कम ये इकोनॉमिकल नहीं है। यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ बैटरीज। रिसर्च इज़ गोइंग ऑन, बट स्टिल राइट नाउ हमारे पास एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्पेशली जो स्टोर करना है, दिस इज़ समथिंग क्रूशल। लिहाजा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जितनी एनर्जी डिमांड है उसी के हिसाब से आपको जनरेशन भी करनी है। तो इफ़ वी हैव अ जनरेशन साइड, मल्टीपल जनरेटर्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास लोड्स हैं। सो एज द लोड वेरीज, इसी तरह से जनरेशन की रिक्वायरमेंट भी आपके पास बढ़ जाती है। ठीक है, और लेट्स से कि जनरेशन अगर लोड कम हो गए हैं तो उस वक्त आपको हाई जनरेशन जो है वो नुकसानदेह है। यू हैव टू रिड्यूस द जनरेशन एज वेल। सो वी नीड टू हैव अ बैलेंस। सो दिस इज़ वन थिंग कि आपको इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर एक बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन एवर द बैलेंस इज़ आउट, तो समटाइम्स दैट इम्बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस किसी भी तरह का हो सकता है। तो इम्बैलेंस अगर कभी भी आपके पास आएगा तो एनी इम्बैलेंस may lead to instability. Okay, this is something we will study, but as far as the system is balanced, तो उसकी कुछ requirements हैं। वो देखते हैं कि अब एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है एनर्जी का, तो you need to have a generation as well as transmit to the consumers. अब उसमें जो मेन इश्यूज हैं किसी भी पावर सिस्टम के इलेक्ट्रिक की बात करें या एनी सिस्टम वर्ल्ड वाइड, उस पावर सिस्टम के अंदर ये जो मेन इश्यूज हैं जो उसको एड्रेस करने चाहिए, नंबर 1 वो है कि जो सप्लाई की रिलायबिलिटी है दैट शुड बी इंश्योर्ड। सेकंड इज द क्वालिटी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी, इसको देखते हैं अभी हम। दिस द थर्ड पॉइंट इज कि जो सिस्टम है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, चाहे वो आप जनरेशन कर रहे हो। जनरेशन शुड बी इकोनॉमिकल एज वेल एज दी ट्रांसमिशन, अदरवाइज उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इकोनॉमी मैटर्स अ लॉट। फोर्थ पॉइंट इज एनवायरमेंटल इश्यूज, अभी हम उसको फोकस नहीं कर रहे हैं, बट व्हेन एवर द बॉयलर्स आर जब फॉसिल फ्यूल्स को आप रन करते हैं, प्राइम मूवर्स जो आपके पास है, जो जनरेटर्स, जो जनरेशन साइड है, यहाँ पे आपके पास फ्यूल है। अब फ्यूल जब भी बर्न होगा तो फ्यूल के बर्न होने की वजह से इन एनवायरनमेंट वी विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड, वी विल हैव नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके, नॉक्स आमतौर पे जिसको कहते हैं।
तो that will severely affect the environment. तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे and I will share some experience. For example, I went to textile industry विद इन कराची, और वो उनके पास तकरीबन 16 मेगावाट जो है वो जनरेट करते हैं बाय यूजिंग आई थिंक गैस, और but they have a very interesting mechanism of recycling carbon dioxide, और 87% जो है वो दे रिकवर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एंड दे recycle it to reduce the pH of the water, जो वेस्ट वाटर है, क्योंकि वो एक टेक्सटाइल इट वाज अ टेक्सटाइल यूनिट है, और उस एक टेक्सटाइल यूनिट ने जो है फिर 87% ऑफ द वेस्टेज जो है उसको रिसाइकल किया, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड से वो अपनी पीएच जो वेस्ट वाटर का है वो भी कम कर लेते हैं. सो दिस इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और आई विल मेक दिस एग्जांपल वेरी क्लियर टू यू, बट ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके ऊपर भी हम आएंगे. सो दीज आर द 4 मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. अच्छा, हाई रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? सप्लाई की हाई रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपके पास जो इंस्टॉल्ड एलिमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी A1 होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन हाई क्वालिटी होनी चाहिए. दिस इज़ वन पॉइंट. दूसरा ये कि देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑफ रिजर्व जनरेशन. रिजर्व जनरेशन मीन्स के इफ़ वी हैव if the requirement is 1, 2 and 3 generators, ठीक है, let's say 10 kVA के हैं ये 10 kVA के, तो if the requirement are being fulfilled, लेकिन हमें नहीं पता कि इनमें से जी ओके आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. नाउ स्क्रीन इज विजिबल. हेलो. जी सर. ठीक है, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था किसी वजह से. सो हम यहीं पे थे जब मैं डिस्कनेक्ट हुआ, इसी स्लाइड पे ही थे हम. जी सर, रिलायबिलिटी स्टार्ट कर ही रहे थे आप. ओके, तो रिलायबिलिटी में पहला पॉइंट तो ये है कि जो इंस्टॉल्ड एलिमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए. सेकंड है कि वी शुड हैव अ प्रोविजन ऑफ रिजर्व जनरेशंस. फॉर एग्जांपल अगर 10 kVA के sort of power generating units हमारे पास हैं overall, तो we should have some available as a reserve so that कि अगर कोई down होता है तो हम उसको कर सकें. Employing large interconnected power systems. Interconnection यहाँ पर क्यों ज़रूरी है? It is because कि किसी वजह से अगर आपके पास कोई route ही down हो जाता है तो we should have alternating route available to reach that load. And the system security should be quite high. Security हम last class में भी काफी discuss किया था हमने. So reliability is the prime factor for a system, good system. Quality, ये quality directly relate करती है उस एरिया को जो हमने study, जो हमारा main focus है regarding stability and controls. क्योंकि controls और stability are making sure the quality of the electrical supply. And how it is being done कि आपकी जो supply है वो regulated हो और fluctuations जो है वो कम से कम हो. इसी तरीके से जो frequency है वो भी regulated हो और उसके अंदर भी fluctuations कम से कम हो. तो stable आपके पास या regulated voltage है and इसी तरह से आपके पास frequency जो है वो भी आपके पास stable होनी चाहिए. And of course the harmonic content should be very low. So these 3 aspects actually define the quality of the electrical supply. और हम इसको achieve कैसे करते हैं? The quality is being achieved by using controls. ठीक है, modeling and control के थ्रू हम ये करते हैं. और gradually of data science और PMUs
आपके पास फेजर मेजरमेंट यूनिट्स आ चुके हैं, आपके पास SCADA है, SCADA से ज़्यादा PMUs are playing their role in maintaining the quality and basically ultimately जितने भी measurement units हैं they actually fed to the control as well as to the model building और फिर इनकी combination से जो है हम achieve करते हैं आपकी quality, improved quality of the electricity. So the first point is the quality is being achieved through proper control of voltages and frequency. It's the power balance. And the second thing is through the large interconnected. यहाँ पे भी interconnected से हमें benefits क्या है interconnected grid से? Interconnected grid से benefit ये है कि of course sometimes short circuit fault है या कोई और fault है उसकी वजह से कुछ lines strip होगी. In that case, agar we have shared reserves available, then we can make a sort of a backup plan जो है वो active हो सकता है. और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जो वेरिएशंस हैं वो भी आपके पास जो है ओवरऑल वेरिएशंस है वो कम हो जाती हैं ओवरऑल सिस्टम में. सो दैट दिस इज द सेकंड पॉइंट कि हमें क्वालिटी किस तरह से अचीव हम कर सकते हैं. ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, अगर हम इसको देखें तो वी कैन डिवाइड इट इनटू वेरी सिंपल 3 parts. The first part is talking about the generation, second is the transmission, and third is the distribution. अभी इसमें load शामिल नहीं किया because load will be treated as a variation on the distribution side. ठीक है, अगर गौर से देखें तो the load will be in real meaning a load will be a load on the distribution. Distribution is like a load on the transmission. ठीक है, और transmission is basically a load on the generation. So ये आपस में heavily interconnected हैं. And if we are talking about the control at the, अगर आप for example if in simple terms अगर आप PID को ट्यून कर रहे हैं on generation side पे, तो जो वो transmission की variation है that may appear as a load to this generation unit. अगर आप transmission में कहीं आपके पास जो devices हैं उनको आप control कर रहे हैं, then the distribution will be behaving like this. ठीक है, so coming back to the basic, they are heavily interconnected और इसको हम 3 parts में divide करते हैं. Now so if we see here we have the generation side. इसमें medium generation है, small generation है, right? Now these generation, this symbol is the synchronous generator. Okay, this is like a synchronous generator, and we have the transformers, transmission, extra high voltage mesh network here. We have different type of transformers available connecting these. Sub transmission system hai. Then we have the distribution, and then we have the low voltage networks जहाँ पे आपके पास small customers हैं, domestic and industrial commercial use हैं. ठीक है, we may have a large, in fact जब load आपके पास ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको आप large customer कहेंगे, medium customers और very large customers में. And these are the tie lines towards the other. So this goes to the whole grid system. Interestingly, power system जो है वो operate करता है different voltages के ऊपर, and this is one category. Low voltage, medium, high, and extra high voltage. Low voltage below or near about 1 kV जो है, this is low voltage. Medium voltage is from 1 to 100 kV. High voltage from 100 to 300 kV, और 300 kV से ऊपर जितने भी हैं they may be treated as extra high voltage. So this is a rough sketch about the structure of the electrical system. Now अब हम अगर एक power generation unit को देखते हैं तो this is a block diagram of that unit, and behind that actually this is the network that we just discussed in the previous slide.
It is connected with the circuit breaker through a step up transformer. ये grid lines आपके पास आ गई. And then we have sometimes an optionally circuit breaker. Circuit breaker ज़रूरत इसलिए भी होती है कि अगर कोई problem आई है तो we can disconnect this system. Now in generation unit, this is the whole generation unit here. ठीक है. तो the electrical energy is produced basically by, हम बात करें सारी AC transmissions की, AC system हमारा. तो synchronous generators are the main units which are actually generating the electricity. Or in generators को they are actually connected through a shaft which is driven by some kind of a prime mover. For example, a turbine. गैस टर्बाइंस भी हो सकती हैं, या आपके पास जनरेटर्स भी हो सकते हैं, डीजल से भी चल सकते हैं, हाइड्रो भी हो सकते हैं. So we have some kind of a mechanical energy or fluid energy is coming from through these valves, और ये टर्बाइन की शाफ्ट को रोटेट करेंगे. So this rotation will rotate the rotor within the synchronous generator. इस सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर हमारे पास एक और वाइंडिंग होती है जिसको हमने माउंट किया हुआ होता है स्टेटर के ऊपर. और सो वी हैव टू मैग्नेटिक फील्ड्स हियर. एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास एक्साइटर से आ रही है और एक आपके पास ये टरबाइन की रोटेशन की वजह से आ रही है. एंड देयर वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ ये जो आपकी मैकेनिकल टॉर्क है, this is basically able to generate the or rotate the rotor of the synchronous machine, right? और इसकी वजह से आपके पास जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है. ठीक है. अच्छा, अभी इसमें जो द पॉइंट इज हियर फ्रॉम द कंट्रोल एस्पेक्ट्स. अब इसमें कंट्रोलिंग क्या है? इसमें अगर देखें तो एक तो हमारे पास कंट्रोलर यहाँ पे ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल. एक और कंट्रोल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जिसको हमने नाम दिया है गवर्नर का. दीज आर द टू बेसिक कंट्रोल यूनिट्स अवेलेबल विद इन द जनरेशन यूनिट. ये पूरा जो आपका जनरेशन यूनिट है, ओके, दिस जनरेशन यूनिट, दिस होल इज लाइक अ जनरेशन यूनिट. ठीक है. सो अब गौर से अगर हम देखें तो वी आर यूजिंग द फील्ड करंट, voltages, generated voltages to regulate the synchronous generator. इसके साथ साथ जो पावर, जो फ्रीक्वेंसी हम जनरेट कर रहे हैं, जो वेलोसिटी आपके पास है, शाफ्ट की वेलोसिटी है मैकेनिकल, एंड द पावर दैट वी नीड टू जनरेट. So we actually see two controllers here, C1 here as a governor and C2 here. और ये कर क्या रहे हैं? एक तरफ आपके पास जो है ये जनरेटर, ये जो गवर्नर टरबाइन के ऊपर लगा है, ये मैकेनिकली वाल्व को कंट्रोल कर रहा है जो कि फ्यूल इन को रेगुलेट करेगा. सो वी आर हैविंग अ रेगुलेशन कंट्रोल. C1 इज लाइक अ रेगुलेटरी कंट्रोल ऑन फ्यूल इनपुट. ठीक है, इसको हम फ्यूल इनपुट कहते हैं. और ये जो C2 है, लेट्स से C2, what C2 is doing is, C2 is regulatory control of the field current. ठीक है. Okay, so mechanical side is there, electrical. So electromechanical, so generation में हम जो कह सकते हैं वो क्या है? जनरेशन में जो मेन फिनोमेना है वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल है. एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल में हम देखेंगे कि देयर विल बी इंटरेस्टिंग इक्वेशन विच इज कॉल्ड स्विंग इक्वेशन, जो हमें हेल्प करेगी इन द टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी जो डायनेमिक्स है उसको स्टडी करने के लिए. लेट्स मूव अहेड.
और इसके दूसरे पार्ट्स देखते हैं. So the generated power is fed into the transmission network via a step-up transformer, and DC excitation or field current required to produce the magnetic field inside generator is provided by the exciter. So exciter is a kind of a controlling device जो कि आपको DC excitation दे रहा है. इसको आप समझ सकते हैं कि this is the controlling side. The excitation current and consequently the generator's terminal voltage is controlled by automatic voltage regulator. So basically we actually control IF, और IF की वजह से जो आपके पास VG जनरेट हो रहा है वो कंट्रोल हो रहा है. ठीक है. So we can make a small control system. For example here इसका अगर मैं यूनिट का बनाना चाहूँ तो it will be like this. Set point जो कि है V reference. ठीक है, ये प्लस हुआ. This is giving signal to the controller. Controller is generating IF. ये IF आपके पास जो है, this IF is going to the synchronous generator, और synchronous generator जो है वहाँ से हमारे पास VG आ रही है. And this VG is, अभी मैं IG को नहीं इसमें कैलकुलेट इंक्लूड कर रहा हूँ. And this is being measured and provided to this VG. So basically what we are doing is हम हमारे सिस्टम को right now I am ignoring the IG, सिर्फ VG की बात करूँ. So this is the feedback control system जिसमें exciter along with the AVG, automatic voltage regulator, AVR, sorry, AVR, is basically controlling the excitation current, और इन टर्न जो है जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको आप कंट्रोल करें. ठीक है, तो ये एक AVR का एक कंट्रोल लूप है. This is one control loop we are having here. Regarding unit transformer, I just added this in these lines here just to make the complete comment कि ये सिर्फ इसलिए लगा हुआ है ताकि ऑक्सिलरी सप्लाई जैसे इवन एक्साइटर्स को सप्लाई और या जो पंप्स या मोटर्स हैं जो जनरेशन यूनिट में, तो उनके लिए आप यूनिट ट्रांसफार्मर्स भी लगा सकते हैं. But right now I will not discuss it more. So in generating units, this is equipped with the now this is about the breakers के क्या benefit है आपको breaker add करने का. Of course कि जब faults वगैरह अगर होते हैं तो उसमें हम इसको isolate कर सकते हैं. And interestingly अगर आप इसको isolate कर देते हैं, disconnect कर भी देते हैं, तब भी आपके पास जो auxiliaries की supply है वो आपको unit transformer से आए. And that this is the reason that कि unit transformer आपने यहाँ पर नहीं लगाया हुआ था, बल्कि unit transformer से पहले आप ये सर्किट ब्रेकर लगाएंगे क्योंकि एट टाइम्स आपको इसको इस सिस्टम को आइसोलेट करना होगा. बट इवन देन ऑन द जनरेटिंग यूनिट यू मे हैव सम ऑक्सिलरीज इवन इंक्लूडिंग द एक्साइटर्स जिनको पावर सप्लाई चाहिए तो वो आप मेन यूनिट से दे सकते हैं. सो दिस वाज जस्ट एन एडिशन. नाउ कमिंग टू द सिंक्रोनस जनरेटर्स. सिंक्रोनस जनरेटर्स जो आपके पास हैं, दे मे बी ड्रिवन बाय द स्टीम और गैस टर्बाइंस. और when we discuss about the mathematical modeling तब हम देखेंगे कि इसके जो 2 poles और 4 poles हैं उनके हिसाब से इनकी जो revolutions per minute है वो किस तरह vary करती हैं. Round rotor and mounted horizontally, long axial length. Low speed generators हैं और high speed generators हैं. Low speed generators are normally driven by the water and high speed generators are driven by the high temperature, high pressure steams, और इनको गैस टर्बाइंस कहते हैं. सो हाइड्रो टर्बाइंस आर लो स्पीड. ओके, लो स्पीड होने की वजह से इनकी जो स्पीड है वो लाइक 125 revolutions per minute है, but they have higher number of poles, while we have turbo generators high speed और इनकी जो number of poles है वो relatively कम होते हैं. ठीक है, एंड इनका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है और जो एक्सियल लेंथ है वो शॉर्ट होती है. वाइल हाई स्पीड जनरेटर्स जो हैं उनकी जो
axial length है it is larger, and in mathematical equation we will see कि why जब हम इनके mathematical model देखेंगे तो we will talk about that. Wind को अभी मैं include नहीं कर रहा, wind को भी हम देखेंगे बाद में. So we have some kind of just the excitation systems. Excitation systems की हमें क्यों ज़रूरत है? इसलिए कि in synchronous generators we need to have two the magnetic for it is basically needed to excitation systems की main वजह क्या है? We need to provide some the other magnetic field. एक प्राइम मूवर की वजह से आपके पास जो मूवमेंट आती है, और वी नीड टू प्रोवाइड अ मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर वो प्राइम मूवर का जो रूटर है दैट इज रोटेटिंग. तो उसके लिए वी नीड बेसिकली द एक्साइटर सिस्टम्स. अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज द कैस्केडेड डीसी जनरेटर्स. AVR, you will find AVR in every exciter system. ठीक है, because going back here we see कि exciter को basically जो input आपके पास आ रही है it is coming from the automatic voltage regulator AVR, or we have this the first one is DC generators, reluctance machines, inside out, and SG is the synchronous generator here. These are the synchronous generators we have, SG. और ये जो आपके पास वाइंडिंग्स हैं ये आपके पास स्टेटर की वाइंडिंग्स हैं. एंड SR इज द स्लिप रिंग हियर. अच्छा, स्लिप रिंग आपको कब चाहिए होते हैं? कैन एनीवन टेल मी स्लिप रिंग्स की हमें क्या ज़रूरत होती है? क्वाइट अ बेसिक थिंग, जस्ट टू रिमाइंड. स्लिप रिंग्स अगर किसी को याद है तो काइंडली, व्हाई डू वी नीड स्लिप रिंग्स? तो ये कम्यूटेटर है ना जो बेसिकली मैकेनिकल रेक्टिफायर कहलाता है. और सिंप्लीफाइड क्या स्लिप रिंग्स स्पेशली क्या कर रहे होते हैं? तो कलन कलेक्टर्स है ना ये सिंपल. राइट. तो व्हाई डू वी हैव slip rings here connected with a rectifier, and why we don't have slip rings connected here, no rectifier? अगर आप देखें तो in figure F slip rings are connected with the rectifier. Here also slip rings are connected with the rectifier, slip rings connected with the rectifier. And but here in the first one slip rings are not connected with the rectifier. इसकी कोई खास वजह? What do you think? सोचिएगा इसको. Excitation systems में इसको सोचिएगा कि why we have this arrangement here. जो मेन एक्साइटर है आपके पास ME is the main exciter. ओके, मेन बेसिकली तो हम इसका यूनिट जो इक्वेशन है सिंपल हम एक्साइटर की वो यूज करेंगे, मॉडल में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट अ मॉडल हियर कि जिसमें हम एक्साइटर को, एक्साइटर होगा, ये इसकी आउटपुट होगी और ये इसकी इनपुट होगी, एंड वी विल फाइंड आउट द एक्साइटर circuit E of S only. ठीक है, you can say that Y of S and U of S here. So finally our target will be to figure out okay, what is Y of S upon E of S where ये क्या है. ठीक है, for in all these cases. But the insider story is important. पहला वाला जो है वो DC generators हैं दो. Second is the reluctance machine. This main exciter is basically a rotating, or the third, fourth is control rectifier fed from the auxiliary supply, and then we have the control. This one is the control rectifier fed from the generator terminals. Control rectifier fed by right. Sure.
Now this is the main diagram that I was talking about. AVR को जो हम block diagram में देंगे. So we have the network, we have the step transformer. We are now focusing upon this, and we have a power system stabilizer here. So the block diagram of excitation. अगर आप और से देखें excitation को, अच्छा ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो रही है, तो मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं. ओके राइट, मैं अभी एंड करता हूँ और हम दोबारा फिर कनेक्ट करते हैं.